हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं सब लोग? मेरा नाम है अरविंद और हम हैं हैदराबाद बॉयज और मेरे साथ है सौरभ। हेलो एवरीवन, सौरभ हियर। सब होप सबका दिन अच्छा रहा। कल हैदराबाद का गेम है तो आई होप हैदराबाद जीते। So but let's get going with the games that we had yesterday and today. हाँ, बिफोर वी गेट इनटू द गेम्स लेट्स जस्ट टॉक लिटिल बिट अबाउट द कोहली गंभीर धमाका घमासान जो हुआ है। अम, हाँ, मतलब मैं देख रहा था कि क्या हुआ है। मतलब आजकल ये डायलॉग्स भी आ गए हैं। मतलब आज कब तो वो भी आ गया कि हुआ क्या है तो तू अब मुझे सिखाएगा, वो समथिंग Gambhir, I think, said to Kohli, and then there was a tweet going around. If you can't take it, if you don't want to take it or can't take it, you have to give it, something like that. I don't know the exact name of the tweet, but I think Kohli ने वो tweet किया। फिर मैंने ये देखा कि you abuse my players, they're like my family, so that's exactly felt Gambhir felt that। और और ये हेडलाइन थी इंडियन एक्सप्रेस की, आई थिंक। इन्होंने लिखा कि नवीन उलग ने भी कमेंट करा आज कि आई हैव कम टू प्ले इन आईपीएल नॉट टू मेक अब्यूजेस। द गाय हु वाज इन द आल्सो इन द कंट्रोवर्सी हियर। तो या बिफोर वी गेट टू अदर और गेम्स, आई थिंक आई थिंक आई क्या थिंक हुआ यू आफ्टर जस्ट वी टॉक्ड अबाउट इट? तो व्हाट आर द रिपरकशंस देयर? क्या हो रहा था आई इंडिया थिंक में? आई थिंक यू आई थिंक यू जस्ट मिस्ड वन मोर थिंग। गौतम गंभीर का एक ट्वीट आया, सो मे बी यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट क्विकली। इट वोंट टेक मच टाइम। गौतम गंभीर ट्विटर, द फर्स्ट tweet. क्या है? So that kind of completes the entire story, at least till today. So even he has put out something. But yeah, I was not able to understand initially कि who was he pointing towards to, लेकिन समझ में आया कि ये शायद it is kind of targeted towards certain media houses. जिसमें मुझे लगता है रजत शर्मा of the world from India TV, and they have come out in equivocal support of विराट कोहली, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं। And I think it's a rebuttal to them or him. I don't know if it was only Rajat Sharma or any other media houses who have done this. Is So I was able to pull it up. Is this the tweet we're looking at? Yeah. The man who ran away from Delhi cricket citing pressure seems overeager to sell paid PR as concern for cricket. यही कलयुग है जहां भगोड़े अपनी अदालत चलाते हैं। तो द मुझे अदालत से मुझे लग गया ये रजत शर्मा है। और मैन हु रैन अवे फ्रॉम दिल्ली क्रिकेट, आई डोंट नो कि इज इट टुवर्ड्स विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली का एक है कुछ, लेकिन आई डोंट नो इफ इट वाज हाउस इट लिंक, मुझे समझ में नहीं आया। विराट कोहली का है कुछ दिल्ली क्रिकेट से, क्योंकि कुछ हुआ था बहुत साल पहले हाँ, व्हेन ही वाज। सो करेक्ट। या आई मीन एट एट द एंड ऑफ द डे मेसी हो गया ये तो। मतलब आई मीन आई एम हियरिंग गावस्कर और समवन सेइंग इनको बैन कर दो। मतलब I don't know what he meant it by that, but I think a very you know a matured response would have been the response which is given by, I think, Harbhajan as well, and as well as Ravi Shastri. I think Ravi Shastri, Harbhajan I Dena think is उनके funny. Huh? He himself slapped Srishant, way हाँ, back. लेकिन हाँ, But I तो मुझे guess लगा कि he's been through this journey, तो उसको पता है कि क्या होता है, कि वो heat of the and, moment वाला and, हिसाब है। and by the way, Harbhajan Singh or Srishant, they're in good terms now. In fact, they're doing advertisements together. So क्या so बात yeah, है so यार। I don't know if it's going to happen अंडरस्टैंडेबल, with ठीक है। आई मीन हो जाएगा ऐसा, ये नहीं है। आई मीन आई केप्ट सीइंग दोज ओल्ड वीडियोस जहाँ पे गंभीर वो अपना प्रेस मैच विनिंग इनिंग्स, वो अपना मैन ऑफ द मैच जो आपने बोला था पिछले वीडियो में, जब कोहली वाज स्कोरिंग हिज फर्स्ट सेंचुरी आई थिंक। या और तो मैंने ये वो बताया भी याद था, आई थिंक करना। जो 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 फर्स्ट मैच हुआ था वेयर गंभीर वाज कॉट यू नो silencing the crowd in Chinnaswamy. I think वहां पे एक वीडियो सरफेस हुई थी where Kohli and Gambhir was just having a casual chat, and Gambhir has actually said that, I mean, कि post 2013 जब जो हुआ था एक बार ऑन फील्ड स्पैट जो हुआ था आईपीएल में, उसके बाद भी he has spoken to Virat on number of Yeah, I mean, occasions. It's just the so on field.
सो इंडियन मीडिया क्या कह रही है? उसको मतलब तमाशा मिल गया, एक अच्छा स्कूप स्टोरी। I I think Indian media is not siding with गौतम गंभीर एंड आई कैन अंडरस्टैंड क्रिकेटिंग रीजन मेरा यही कहता है आई डोंट नो मीन मैंने ज्यादा मीडिया वालों को उनका ओपिनियन नहीं देखा है एक दो मैंने स्निपेट्स जैसे मैंने बताया राजेश शर्मा का आई हैव एक्चुअली लुक्ड एट व्हाट ही वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट विराट कोहली एंड गौतम गंभीर व्हिच आई थिंक वाज इनसेन थोड़ा बहुत और मुझे वो समझ नहीं आया राजेश शर्मा इज बेसिकली अलाइन टू बीजेपी तो मुझे समझ नहीं आया कि व्हाई वाज ही हैविंग अ गो एट गौतम गंभीर तो आई थिंक गौतम गंभीर इज एट फॉल्ट हियर मेरे हिसाब से आई थिंक वी स्पोक अबाउट इट एंड वो कोच हैं कोच का ज्यादा इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए एंड एज जैसे कायल मेरिस के बारे में हमने बात की थी कि यू नो इफ टू एडल्ट्स आर हैविंग कन्वर्सेशन हु आर यू टू कम इन बिटवीन एंड यू नो एंड इंटरवीन इन द कॉन्वर्जेशन तो और मुझे जैसा लग रहा था कि यार ये जो थोड़ा आया है मीडिया में कि क्या क्या स्पैट हुआ व्हाट आर द एग्जैक्ट वर्ड्स व्हिच आर लाइक स्पोकन आउट ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली वाज ट्राइंग टू काम द सिचुएशन डाउन एंड इट्स काइंड ऑफ हाँ, गेटिंग प्रूव लेकिन आई डोंट नो फॉर सम रीजन व्हाई गंभीर was acting the way that he did. और I think असली नवीन उल्ला हाँ असली चिंगारी तो नवीन उलक ने आंख चिंगारी होनी, अब वो तो सीन में नहीं आ रहे। इट्स ऑल पीपल आर टॉकिंग अबाउट गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली। उन्होंने तो जैसे I think I एडिंग think फ्यूल the टू फायर only वाला लॉजिक करा है। right I think ना the only thing you can हालांकि मैंने एक बात बोली थी विराट कोहली whatever he did was on field while playing the match और उसके बाद मेरे हिसाब से कुछ होना नहीं चाहिए लेकिन I do not know what was the extent of quote unquote abuse that was thrown by Virat Kohli towards Naveen ul Haq क्योंकि ऐसा थोड़े वीडियो क्लिप्स में आ रहा है कि ही इज पॉइंटिंग शूज टुवर्ड्स हिम वगैरह वगैरह हाँ। वगैरह हम्म। वो एक दो बार ऐसा लगा है अब करेक्ट। it could be that he's just picking the grass out of the grass out of his spikes वो भी हो हो भी सकता है सकता है, लेकिन हो सकता है। लेकिन एक वीडियो थोड़ा सा ना एक क्लियर है कि ऐसा ऐसा है कि भाई ही इज पॉइंटिंग हिज फेस टुवर्ड्स द शू एंड देन ही इज पॉइंटिंग हिज फेस टुवर्ड्स नवीन उल हक इमीडिएटली तो वो यू डोंट नो यू कैन जस्ट रीड बिटवीन द लाइंस लेकिन हम्म। that's the only thing and if I have to say something against Virat Kohli even though without knowing what exactly he said did he take really too far I do not know lekin even if he did I don't think so Gautam Gambhir had any business in this entire spat. That's my thing. असली असली ऑडियंस तो स्पेक्टेटर्स और तमाशा देखने में तमाशा ही था, और लोगों को तमाशा देखना पसंद है। सो ठीक है सबने मजे आईपीएल की लिए। रेटिंग आईपीएल की रेटिंग आईपीएल की और बढ़ गई रेटिंग हाई हो गई है। इट्स हाँ या कंट्रोवर्सी हैज टेकन इट अप टू द नेक्स्ट लेवल। मैंने या कल आई थिंक एक यूट्यूब वीडियो देखा था। समवन पोस्टेड द होल थिंग। He was in the stadium. I'm sorry, I don't know the name of the channel. And he got 9.5 million views for that 5 minute video. So या craze बढ़ गया है, and it's Virat Kohli and Gambhir. Gambhir is also that whole पॉलिटिकल एंगल भी आ गया है। एमपी है, ये देखो बीजेपी के एमपी हैं, तो फिर वो आ जाता है। क्रिकेट एंड पॉलिटिक्स आल्सो आर मिक्सेबल देयर। या so yeah, hopefully things will die down. देखना पड़ेगा नेक्स्ट मैचेस ऑफ बोथ, कैसा बिहेव होगा एलएसजी। आई डोंट नो, आज एलएसजी का गेम हुआ था which what this thing, I don't know any post reaction there or not, we'll get there, but yeah, I hope they don't, अगर ये लोग प्लेऑफ्स में आते हैं और मिलते हैं तो ये तो बड़ा मजा आएगा। नहीं आई थिंक मतलब आई थिंक द इमीडिएट बैटल दैट यू कैन लुक फॉर आई डोंट नो कि विराट कोहली और गौतम गंभीर आमने सामने होंगे कि नहीं लेकिन फॉर श्योर इफ दे मीट नवीन उल हक एंड विराट कोहली दे गोना बी प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर श्योर बिकॉज प्लेइंग नवीन उल हक अगेंस्ट की ईच अदर। बॉलिंग मैं वही बोल रहा बॉलिंग हूँ, अच्छी अगर रही ये है दोनों सो मिल, आई डोंट नो इफ द स्टार्स विल बी लैंड, बट इफ दीस गाइस मीट इन प्लेऑफ्स, इफ दे क्वालिफाई बोथ एंड इन दैट पोजीशन, दैट्स गोना बी एन अमेजिंग वन। या देखते हैं क्या होता है ऐसा अच्छा मसाला ऐड हुआ है, सो इट्स फीलिंग ऑफ एक इमोशन अटैच्ड टू द क्लब एंड प्लेयर्स एंड ऑल दैट, सो इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग वन डेफिनेटली। चलो राइट क्विकली हम मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं। आई थिंक यू हैड 3 मैचेस सिंस दैट डे।
Let me just pull it up. I think we had this one as a first match, which happened Yeah, day before. DC versus GT. DC Yeah, वर्सेस जीटी. ऐसा लग रहा था कि ये गेम तो खत्म. मैंने एक दो बॉल देखे और द द स्पेल फ्रॉम मोहम्मद शामी, they were 22 for 4 yeah, and it looked like they were done. yeah, ठीक yeah, है, yeah, yeah. अमन हकीम खान ने बचा लिया उनको, फिर अक्षर पटेल ना he's been playing, but sorry, 130 was never going to be enough. और ऐसा लगा 130 was a below par score, but पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे. गुजरात टाइटंस had a very rare loss where they just couldn't hit. I mean, Hardik Pandya was not out. He played almost all of the game. 19 overs पूरा Yeah. खेला उन्होंने. And very poor strike rate, and he just never got support from anyone. And ऐसा लग रहा था कि ये लोग ऐसे ही ड्रैग कर रहे हैं, and then पता नहीं क्या हो गया. And then finally, Ishant Sharma in the last over was amazing. They thought Yeah. Rahul Tewatia दो छक्के मार के जिता देगा. अपने दो छक्के मारे, but Hmm. never was enough. So I remember when I was playing cricket for, the probability of winning was shifting, like first ball एक ball पे Delhi win is 80%, second ball पे अगर तेवातिया ने छक्का मारा तो you know Gujarat is now going to win by 88% or something like that. So it was swinging, pendulum was swinging, but finally the end, 5 runs short. What happened? Yeah. A fascinating match. I think जैसा आपने बोला, मिडिल ऑफ द इनिंग्स मुझे लगा तो ये जीटी के लिए तो बहुत इजी विन होगी, considering the kind of form they are in. And I mean, as you said, I think मोहम्मद शमी bowled brilliantly. मुझे याद है, I think 2-3 महीने पहले हमने कुछ, I think 2 महीने पहले, I think when we started our channel, हमने मोहम्मद शामी के बारे में कुछ बोला था एज फार एज टी ट्वेंटी स्पेशली. मैंने इनके फॉर्म के बारे में बताया था, एंड आई थिंक ही इज अ हिस्ट्री. मैंने उस समय बोला था, लेकिन ही इज काइंड ऑफ प्रूविंग मी रॉन्ग, एटलीस्ट इन दिस टूर्नामेंट. आई थिंक ही इज बॉलिंग वेरी वेल. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिम टू बॉल इन द WTC फाइनल. देखते हैं कैसा करते हैं. लेकिन कमिंग बैक टू द मैच, गुजरात टाइटंस की बैटिंग, आई थिंक आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट मिस्टर हार्दिक पांड्या. आई थिंक, I mean, you can also, speak about rest of the batsmen. They kind of flopped. लेकिन यहाँ पे मैं हार्दिक पांड्या की अप्रोच, जो which I think we have kind of spoken or touched upon in the past few episodes, वो पता नहीं चल रहा है because it's kind of getting encapsulated with the kind of good performances by rest of the batsmen. तो हार्दिक पांड्या is aping Mahendra Singh Dhoni. I'm going to make this statement outrightly. He's aping in all the aspects. As soon as I think he touches the cricket field, he talks like him. He captains like Mahendra Singh Dhoni, which is not a bad thing. Um, and he bats like Mahendra Singh Dhoni. And I'm saying Mahendra Singh Dhoni of 2014, 2015 to 2021, 2022. I know he's been batting well in this edition. But if people recollect, I think Mohammad Dhoni bola tha, Mahendra Singh Dhoni has been struggling or was struggling, as far as batting form was concerned, for a long tenure of time. He was in the Dhoni of that he was between 2005 and 2013. Correct. और हार्दिक पांड्या का भी मुझे ऐसा लग रहा है. I don't know why has he changed his entire style of batting from the guy who was almost a go-getter as far as fetching runs are concerned. Now he's become a tuk-tuk academy. At least at least in the first 20 Correct, 30 चला रहे. balls, yeah, I mean, he looks to settle down and stuff. I don't think so it's working. It didn't work for India as far as the international matches are concerned, and it's not working here as well. He's just taking the very same approach that he was basically following in the international matches even now. और ये मुझे लास्ट सीजन में भी लगा था. हालांकि लास्ट सीजन ये जीत गए, अभी भी अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं. एज आई सेड, लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स प्लेइंग वेल. लेकिन ये मैच हार्दिक पांड्या ने बनाया और हार्दिक पांड्या ने ही गवा दिया. Correct. अंत तक वो आए, लेकिन he just couldn't take Gujarat Titans home. So I think there may be a hint of arrogance too. 130 score है, हमारे players हार्दिक पांड्या है, तवातिया है, मिलर है, कर लेंगे. And I think they kept it too late to the game, and I think
I have to appreciate Khalil Ahmed, Ishant Sharma have done well. Yeah, Brought them they out, did well. especially with the kind of target they've been, given to defend. They've done really well. Yeah. I think 18.3 ओवर्स तक तो मुझे लग रहा था कि ये मैच डीसी जीत जाएगी. जब 18.3 ओवर्स हो गए थे, इन द लास्ट 3 balls of Anrik Noke, I think Tewatia ने doing Tewatia and two Tewatia sixes, things. Maria. Yeah, I thought the game was over, but I think Ishant Sharma, the wily Ishant old Sharma Ishant bowled Sharma, he's still around and he's still, very surprising, very surprising. still He's not around. really a good. I still. I mean, even now, even in the past, I have never kind of considered him to be a very good T20 bowler. But But you can say his experience has played in very earlier. experience, He yeah, yeah, knew how was a cool guy experience, here, cool yeah, cool yeah, customer yeah, there, yeah, yeah, very yeah, cool customer yeah. there. So yeah, So surprising result, another surprising result. So yeah, we've been this was having surprising results. surprise. This was a surprise, and yeah, I mean, sorry. और So आज yeah, फिर एक और मैच हुआ था, आई थिंक correct. उसके बिटवीन. बाद, so yeah, we'll move from that Hmm, match. So उसके बाद we hmm, had LSG versus Chennai Super Kings जो hmm. होना था, and I'm guessing ये हुआ नहीं. Uh, Yeah, Actually, LSG बारिश की वजह. escaped there. 125 or 7. I think Chennai Super Kings would have been unhappy with this क्योंकि वो जीत जाते. They would have been favorites to win this. Another poor performance. या पुअर परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, राइट. लेकिन एक जस्ट टू कट यू शॉर्ट, आई एम सॉरी. ये Sorry. हालांकि चेन्नई वाज फेवरेट्स, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, एलएसजी आप देख रहे हैं 125, आई थिंक 19 कितने ओवर्स हो गए थे. ये लखनऊ की पिच, इट वाज अगेन इन स्क्रूटनी. आई डोंट नो इफ यू सॉ द वे हाँ तो देख रहा मार्कस हूँ. मार्कस स्टॉइनिस गॉट आउट. इट ऑलमोस्ट लुक लाइक अ डे 3 Is पिच. that the one where जबरदस्त से आउट हो. Ravindra Jadeja, threw the ball and I saw that. Yeah, I saw the wicket and I was like, Stoinis was like, "हुआ क्या है?" वाला expression. राइट, राइट. Yeah, सो ये आप very देख रहे हैं, weird. लखनऊ में जो गेम्स हो रहे हैं, they're all And they should, low scoring matches. yeah, they should fire that pitch curator. I mean, this can't be हाँ, the तो it standard of seems, IPL. and it seems the nature of the pitch is not going to change for the entire IPL. But Yeah, I mean, they should surprisingly, fire we him for are. this season. Yeah, I don't know if they can do anything, but I think that was a lucky escape there. Yeah. I would still think 125 would have been chaseable. We have a Yeah, lot of so we have a lot of World Cup matches, the ODI World Cup matches in Lucknow. So that's one thing to think on. very true, very true. Let's talk another game which happened, which was Mohali में जो हुआ था, Punjab versus Mumbai Indians. I thought this was a very interesting game. I saw a few minutes. 17 for 1 या 18 for 1 पे मैंने देखा था, and then you had Matthew Short and then Shikhar Dhawan, doing their partnership with Liam Livingston, finally showing what a player he is to the IPL. 82 of 42, striker of almost 200, and then Jitesh Sharma of 49, 200 लेके पहुंच गए थे because yeah, they needed that cushion for well past 200. It's not even 200, it's almost 215 target, which is we're looking now 10 and a half plus run rate. Yeah. I thought Punjab were favorites to win this, Yeah. and Rohit Sharma had another failure. मुझे लगा ये तो हो गया, but Ishan Kishan and Surya Kumar Yadav had a partnership, and they just took blown Punjab away, 75 and 66, and Tilak Verma and Tim David finished it off. Talk about it. What happened here? So मुझे लगा it's going to be a tough target, and Mumbai has done it. Now, just Surprised us. looking back, and I think ये मेरा assessment था उस समय भी, पंजाब की bowling is not that strong. पंजाब में दो तीन बॉलर्स हैं अच्छा बॉल कर रहे हैं, लेकिन they can be hit around. जैसे अर्शदीप सिंह है, he can have a very, when he has an off day, he really have an off day. राहुल चार is the only bowler, और I think उन्होंने आज भी ठीक ठाक ही बॉलिंग की है, as far as I remember. Hey, he's been और thrashed 3 overs, 30 ट्रैश टुडे runs. 30 रन. Yeah, हाँ, yeah. मतलब अगर आप देखेंगे The guy दूसरों, who bowled अच्छा, well was Rishi Dhawan and then Nathan Ellis, नेथन who एलिस. also took the wickets as well.
Yeah, so Nathan Ellis I think has replaced Rabada. तो I think Nathan Ellis ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मुझे कहीं पे लगा कि who was the opener of Punjab Kings 11? I think not Simran. नहीं Darcy Short who Darth. came one down, Correct, Matthew down Short, I yeah. guess. अच्छा Darcy, अच्छा वो Matthew Short, तो Mr. Short I think was the villain. As far as Punjab is concerned, I know 214 sounds a lot, लेकिन considering the pitch and considering the bowling attack that Punjab has, they always need to keep 20 to 30 runs as a buffer. And the pitch was flat. And just looking at the strike rates of everyone, just look at the strike rates of everyone. He was the 100, only eh? one who was, and he was the only one who is kind of standing And he had odd the out lowest strike rate across the board. मैं चलो रोहित शर्मा ने across the मारा ही नहीं board. है. So I think, हालांकि मुझे लगता है कि शायद वो भी अगर 15-16 रन और भी ऐड कर दें तो भी शायद कम ही पड़ जाते, द वे मुंबई बैटेड, आई थिंक वी स्पोक अबाउट मुंबई. आई थिंक मुंबई का था कि व्हाट इफ सर्टेन प्लेयर्स कम बैक टू फॉर्म. ओनली रोहित शर्मा हैजंट कम टू पार्टी येट. ईशांत शर्मा प्लेड वेल Sharma टुडे. has joined in. एंड ईशांत And शर्मा Surya का Kumar Yadav, yeah, that I think is a very big bonus for him. Ki wo is kind of the back-to-back I performance. think I think last 3 to 4 innings were kind of was an indication somewhere that he's coming back to form, and he certainly has. And certain partnerships and contributions from Cameron Green, Tilak Verma. I think Tilak Verma is also another youngster that we got to keep an eye on, along with Jitesh Sharma. Jitesh Sharma has caught my eye. I think a lot of people are talking about Jitesh Sharma from Punjab Kings. So Tilak Verma, Tim David, they kind of finished it off. तो एक टाइम पे तो आके मुझे फॉर्मेलिटी लग गई थी कि मुंबई इज गोना विन. It was just a matter of they keeping their cool and making sure they don't lose wickets in panic or in clusters. So it was जैसे किशन और ग्रीन और किशन और सूर्य कुमार की पार्टनरशिप हो गई थी. The match was over. I think Yeah, Punjab yeah. would be little disappointed the way they bowled. And And of course, they could Surya have Kumar possibly have had was, 20-30 when runs you look more. at the strike rate there of Surya Kumar, 66 of 31. 31, I yeah. bashed it. 8 fours, 2 sixes, 1 212 ka He strike rate. was just going hammer and tong. So I think it's an ominous. I think I still believe Mumbai Indians ki bowling is relatively weak, and that was on display again. I think their batting is ominous. In one, Surya Kumar Yadav, Cam Green, Tim David, Tilak Verma, and just imagine if Rohit Sharma, can give I know. some small little contribution here and there, then their batting is immensely strong. I think any target of 170, 180, and if their batting clicks, I mean, that goes with any batting, any team. But I think with the kind of batting that they have, I won't be surprised that they are in the final four. So it kind of have messed up the entire It table, did, and I was as you can just see. looking at the table there. So yeah, in that match, I was looking at the table here. There's 2 points separate the top 7 teams. There's Yeah. 2 points. And many of them played 10, some of them have played 9, a couple of them have played 10, and you have Kolkata and Sunrisers tomorrow. Is that a very, very important game for both of them? Because the loser of that is almost definitely out. Because वो 6 points पे ही रहेंगे and 9 games हो जाएंगे, and then you're looking at 7 teams ahead of you who are probably in a better spot to qualify. Actually, Kal was almost, I would think I mean, Delhi, I think, is knocked out for me. Kal, I think Sunrisers or Kolkata, one of them is out as well. The winner is probably in the reckoning because he'll be at 8 points. Winner will be close to with these guys. Yeah. And the loser will be just far too away, and they'll be tied with Delhi Capitals. An important game. I want Sunrisers to win. Let's hope they do that. But yeah, very little to separate. थोड़ा open हो गया था जो हम लोग रहे थे कि शायद केक वॉक होगा, but these last few wins थोड़े surprises निकले हैं across the board. So yeah, and just a point, I think, I don't know ये जो 11 points हो गए हैं लखनऊ के और and that's a चेन्नई के. big thing. That whole no result, how big of that will be, will impact them. How impact them. Yeah, I mean, Lucknow would think कि शायद we escaped really. Chennai would think maybe का जीत जाते. So
Yeah, it's just opened up. Things have become very, very interesting, off the field and on the field. आई थिंक जैसा मुझे याद है कि मतलब मुझे याद है हर वक्त आईपीएल में बोलते थे कि ये 3 से 4 टीम आर वेरी क्लोजली कंटेस्टिंग, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आईपीएल। लेकिन मुझे आई डोंट रिकलेक्ट कि इतनी सारी टीमें आफ्टर more than half of the matches are already over, and I think Everyone has a even chance. now everyone has a chance, even now. Even now, Mathema, अगर कल सनराइजर्स कोलकाता में जो जीता, you're looking 8 teams who have a good chance of qualifying. good chance, yeah, yeah. I would say the last So two are very difficult then, but 8 teams have a good chance of qualifying with this. So yeah, let's hope Sunrisers win tomorrow. Yeah, with that we'll end for yeah, today. yeah. All right, please All right, hit that like button, please share, please subscribe. हम बाद में बात करते हैं. Till then, bye. yeah, goodbye, bye bye.